Okay, so guys, yesterday we discussed about global warming, in other words, climate change. Okay, but we also distinguished, right, between the two terms, right. What is the difference between global warming and climate change, right? Let me tell you one more very important fact about global warming, right? This term has deliberately been avoided by the world leaders. ग्लोबल वार्मिंग से आता पता लगता हो पता नहीं क्या हो रहा है, राइट? पता नहीं कितना वार्म हो गया, मर जाएंगे हम, क्या होगा क्या, इट इज स्केरी, ठीक है, राइट? इट इज स्केरी टर्म एंड दैट्स व्हाई द मोस्ट कॉमन टर्म टुडे यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट यू कॉल एज ग्लोबल वार्मिंग इज क्लाइमेट चेंज. इसलिए आपको हर जगह अभी जहाँ भी वर्ल्ड लीडर्स आपको बात करते दिखेंगे, कभी वो कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, निगोसिएशंस करेंगे, राइट, वो हमेशा क्लाइमेट चेंज वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, राइट? क्योंकि it's frightening word, global warming, and that's why it has completely been avoided. But at the scientific level, हमने बात की थी कि there is a distinction between the two terms, because global warming refers to the rise of the average temperature of the planet Earth, whereas the climate change is the consequence of that global warming, right? That is witnessed or reflected in the form of torrential rains, okay, unprecedented rains, right, snowfall, right, and many other associated consequences. इसलिए राइट, हम उसको साइंटिफिकली इस बेसिस पे डिस्टिंग्विश करते हैं. अदरवाइज क्लाइमेट चेंज द मोस्ट पॉपुलर टर्म, राइट? तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू, राइट? तो क्लाइमेट चेंज याद रखना ना, पॉलिटिकली स्पीकिंग, ठीक है, एक पॉलिटिकल टर्म है. पॉलिटिकली स्पीकिंग क्लाइमेट चेंज जानबूझ के वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं, ठीक है, स्पेशली डेवलप कंट्रीज़ के, उन्होंने क्लाइमेट चेंज वर्ड प्रेफर किया है एज अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग इज स्केरी वर्ड, ठीक है, राइट? इससे डर आता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है. तो इट विल डेफिनेटली क्रिएट ए काइंड ऑफ राइट, ए वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन फॉर द फॉर द पॉपुलेशन और पब्लिक एट लार्ज अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है. सो दैट पब्लिक डरे ना, तो इसलिए हम क्लाइमेट चेंज वर्ड यूज़ करते हैं. हैविंग सेड दैट, वी डिस्कस्ड डिफरेंट gases which are responsible for this climate change, or what you call as global warming, or in other words greenhouse effect. Global warming का रीज़न बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट है. ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे है? हमने ग्रीन हाउस की एनालॉजी, ठीक है, वी कंस्ट्रक्टेड एन एनालॉजी दैट जस्ट लाइक इन ए ग्रीन हाउस विच इज़ यूज्ड टू ग्रो vegetables, right, or other plants, right, in extreme cold conditions, so as to trap the sunlight, right? Sunlight which is easily penetrative through the glass, ठीक है, या मतलब the glass is transmitted to sunlight, right, but when the radiations are reflected back, they cannot escape the glass ceiling, right, thereby heating up the internal atmosphere. And similarly is happening to our biosphere, or for that matter our planet Earth, by virtue of the blanket of gases, right, which was right from day one in our atmosphere, but now this blanket of gases, right, has been further enhanced, right, due to the enormous release of carbon dioxide in the atmosphere, ठीक है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन कल्प्रिट, जिसका हमने पहले भी बात की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों इतना कल्प्रिट है. तो आपने ये कहना कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने इतना ज़्यादा रिलीज़ किया है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर गैसेज,